जब आईपीएल आया था पहली बार, वो जो चीयर लीडर्स आए थे, मैंने ये सोच के भैया आवर क्राउड इज चीयर लीडर्स, वी डोंट नीड चीयर लीडर्स। वेल नहीं यार। प्लेड, पीछे से आवाज है कि वेल प्लेड, उसका क्या करेंगे। शोर शराबे में वाली क्रिकेट है इंडिया में, और यही देखने में मजा आता है भाई। जोक करती हूँ कि सचिन का टेस्ट डेब्यू और मेरा जॉब सेम मंथ नवंबर 1989 में हुआ, दैट्स माय जोक, बट इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट ही हैज अचीव्ड। वन थिंग आई कैन से, ही इज रिटायर्ड एंड आई एम नॉट। तो भाई टीआरपी भी तो चाहिए, वो कौन देगा। हेलो नमस्ते खमागली रॉयल्स फैमिली, दिस इज जयदीप सिंह सलूजा। करता हूँ आपका सुस्वागतम इन अनदर एपिसोड ऑफ द सुपर अमेजिंग, सुपर एंटरटेनिंग, सुपर डुपर एपिसोड ऑफ द रॉयल्स ऑन द रोड, hosted by the Super Royals, एक नए और ज्यादा entertaining format. Firstly, let me introduce you all to our very special guests for today's episode. Firstly, Sharda Ugra ma'am, sports journalist and a die-hard cricket fan. Welcome to ROTR ma'am. Thank you, thank you. It's great to be here. I'm always nervous surrounded by IPL fans because you guys are so informed and so spot on. So I am like on my toes. But thank you. बहुत मजा आ रहा है. Thank you so much, ma'am. It's a privilege to have you here. Secondly, Aryan, super share PBK's fan from Canada. Welcome, Aryan. थैंक यू, ग्रेट टू बी हियर। और सारे एपिसोड यार फॉलो कर रहा हूँ, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। But Rohit bhai, welcome, our very own Super Royal from Mumbai. Welcome to ROTR. Thank you so much. So we'll start discussion with you, Sharda ma'am. आपके करियर के बारे में जानना चाहेंगे। ये कहना चाहूंगी कि जब मैं सारे जो क्रिकेट फैंस हैं, जो ट्रिगरिंग मोमेंट आपने कहा मेरी लाइफ में था 1983 का वर्ल्ड कप। हमें उतनी पुराना है, आई एम वेरी वेरी ओल्ड, बट उतने पुरानी यादें हैं मेरी। और जब वो हुआ था तो क्रिकेट से एवरीबडी फेल इन लव विद क्रिकेट। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जहां मैं रहती थी, आई वॉज ऑलवेज एक्टिव, आई वॉज ऑलवेज लाइक टू प्ले स्पोर्ट। वहां लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना, क्रिकेट की किताबें पढ़ना, मैचेस देखना, बातें करना, उस सब से मुझे लगा कि ये बहुत, और मुझे किताबों और लिखने में बहुत दिलचस्पी थी बहुत पहले से। सो आई थॉट कि दिस विल बी अ ग्रेट प्रोफेशन, लेकिन होगा नहीं है, विमेन डोंट वर्क इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, होता नहीं है ऐसे, वॉट एवर फलाना ढिमकाना। एंड देन आई वॉज एबल टू गेट अ ग्रेट ब्रेक। आई डोंट नो इफ एनीवन हैज हर्ड माय इमरान खान स्टोरी, बिकॉज इन माय कॉलेज, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने कहा कि लेट्स गो एंड इंटरव्यू इमरान खान, बिकॉज 1987 में कुछ वो चल रहा था टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के दौरान। वी सेड ओके, इमरान खान इज पासिंग थ्रू टाउन, लेट्स सी इफ ही विल गिव अस एन इंटरव्यू, एंड ही डिड। एंड जब उसके बाद एंड वो बहुत ही डिफरेंट जमाना था कि हमने फोन, होटल में फोन किया, हम कॉलेज से बात कर रहे हैं, हमको कॉलेज मैगजीन के लिए इंटरव्यू करना है, उसने कहा अच्छा। एक वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ बैक एंड फोर्थ, बट हो गई इंटरव्यू, फिर छापी इंटरव्यू, फिर और की। तो जब एक बार मिड डे न्यूज़पेपर ने पहली और आखिरी बार मिड डे पुट एन एड इन द पेपर सेइंग वी वांट अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर, so I went to meet them and I had all my cuttings and clippings from all these interviews that I had done. उनके rival paper में आती थी, and from that time I started working. This is 1989. So यही हुआ है. I've been very fortunate that I've had a good career, long career, and बहुत मजा आया. It's a tough field, but it's a great job. मैं सबको कहती हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट जॉब है स्पोर्ट्स रिपोर्टर का. मैम, एज यू मेंशन्ड, इट्स अ टफ फील्ड, ये डिफिकल्ट है। तो आप थोड़ा सा लाइट डालिए, क्या आपके अर्ली स्टेज ऑफ करियर में आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी इस करियर के साथ? जो क्रिकेटर्स और जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वैसे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि मैं मिड डे अखबार से आई थी. मिड डे वॉज अ रिकग्नाइज्ड पेपर, सो यू कुड एक्चुअली थोड़ा स्ट्रेंज से आपसे देखते थे कि ये कैसे आ गई औरत यहाँ, लेडीज कौन है, ये लड़की क्या करती है यहाँ. बट वंस यू आर एबल टू एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट, आपकी नेक्स्ट डे स्टोरी छप गई, उन्होंने स्टोरी पढ़ी, इट वाज इजी. जो हमारी एज ग्रुप से थोड़े से मे बी 5-10 ईयर्स सीनियर्स के जो रिपोर्टर्स थे, उन एक दो से आई हैड अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स. दे यूज्ड टू, नाउ आई हैव डिस्कवर्ड देयर इज अ वर्ड फॉर इट, इट्स कॉल्ड घोस्टिंग, बट मेरी तो फिजिकल घोस्टिंग हो गई. लाइक दे डिड नॉट इवन से हेलो फॉर 20 years, they didn't say hello, okay, you're sitting in the press box. But after some time, you did not. It didn't make a difference because so many other people were saying hello. जो जिनसे आपका काम था, वो आपसे बात कर रहे थे. तो what does it matter if there's one insecure journalist, थोड़ा सीनियर जर्नलिस्ट, उसको बुरा लग रहा है कि लेडी आ गई हमारी प्रेस बॉक्स में, लड़की आ गई प्रेस बॉक्स में. तो वो तो थी एक दो चीजें. और मैं सबसे यही कहती हूँ, जब मुझे पूछते ना, जैसे घोड़ों के साथ होते ना वो ब्लिंकर्स, ऐसे ना तो मैं लेफ्ट देखती हूँ ना राइट देखती हूँ, ऐसे चलती गई काम करती गई. और मैंने सोचा भी नहीं कि आई शुड नॉट बी देयर.
तो मेरा था कि प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करने दो. सो आई वाज एबल टू वर्क. आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स इन द प्रोफेशन नाउ. बट पहले जो 2-3 साल होते हैं, लिटिल बिट इनसिक्योर, लिटिल बिट वरीड, यू लिटिल बिट, यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ. इन दैट इफ यू जस्ट, आई वाज लाइक दिस, कि काम करो, काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, स्टोरी लिखते रहो. स्कूप इतने ज्यादा नहीं मिलते थे, और स्टोरी लिखते रहो, अच्छे से लिखते रहो, टेल टेल योर स्टोरी वेल. बट मुझे ये पता है कि जो काफी सारी लड़कियां थी 1992 के आसपास, women started coming into sports journalism. You saw more and more of them in papers, especially English language papers. I know that they all had problems. I know that they faced difficulties and they were treated very badly by their organizations, by bosses, by senior people. उनकी जो भी insecurities थी वो सब निकाल रहे थे उनके ऊपर. But I was fortunate. But I know it's not an easy profession for younger women particularly. And now for younger men, because the pressure on it is enormous. आर्यन भाई, आपसे बात करना चाहूंगा. आपकी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा, कैसे पीबी के फैन बने. जर्नी यहाँ से शुरू हुई कि 2008 में, क्रिकेट का तो 8 साल का बच्चा था मैं, मुझे कुछ नहीं पता था. तो मेरे डैड मुझे ले गए पीसीए, और एक ही याद है कि एडम गिलक्रिस्ट ने मेरे सर के ऊपर से वो फेमस ग्लांस मारा था स्क्वायर लेग के ऊपर से, और वो मैच हम हार गए थे. एक्सेप्ट फॉर दैट, जितने भी सीजन इंडिया में नहीं हुए उसके अलावा मैंने कोई मिस नहीं किया. इस सीजन को छोड़ के हर मैच हर साल गया हूँ. और कट टू दैट कि मैं थोड़ा पहले खेलता भी था, तो आई गॉट टू गो टू स्पिनर्स एंड फास्ट बॉलर्स कैंप. आई थिंक इट वाज अंडर 19, अंडर 23. तो जिस ग्राउंड में अब तक मैं मैच देखता था, उस ग्राउंड में आई वाज स्टैंडिंग एंड आई वाज शेल शॉक्ड लुकिंग एट, ओके वाओ, what is this, what it must be feeling like. And I think I got to work with the franchise last year also. It's like life coming to a full circle. And I think it is something, I've stayed loyal to the franchise and I've got the rewards for it. Yes, we have been short, but we haven't been short by that much, which is an inspiration for all our fans. And with the continuous support to the franchise, we hope, and we are off to a good start, so fingers crossed. Trevor is there, Shikhar is there, and we've had a lot of good players. You take out the list, it's that luck has been eluding us. ये किस्मत का खेल है. और आई थिंक किस्मत, जिस हिसाब से बारिश आई है पहले मैच में, मुझे लगता है दैट इज अ साइन फ्रॉम गॉड कि इस बार किस्मत शायद हमारे साथ है. सो थोड़ा सा डिस्कशन को आप शिफ्ट करते हैं इंडियन फैंस की तरफ. इंडियन फैंस क्रिकेटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि जिस तरह से इंडियन फैंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस नंबर्स में इंडियन फैंस आ रहे हैं अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीएल. आईपीएल के बाद इंडियन फैंस के पास एक अपनी खुद की सेपरेट टीम है इंडियन क्रिकेट टीम के अलावा सपोर्ट करने के लिए. तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन फैंस का क्रिकेट इंडस्ट्री में? इंडियन फैंस के बगैर मेरा मानना है कि इंडियन क्रिकेट नहीं चल सकता है. लेकिन आपको ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं. पर्टिकुलरली हमारे स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं, आई नो कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजेस होती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन फार बेटर होता है स्टेट एसोसिएशंस के कंपैरिजन में. इंडियन फैंस ने बनाया है इंडियन क्रिकेट को. जो जो ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमीर क्रिकेट बोर्ड है, ये फैंस की वजह से है. कोई लोग मैच अपने ऑफिशियल्स के लिए देखने नहीं आते, वो प्लेयर्स को देखने आते हैं. और फैंस को वो कितने धक्के खा के आते हैं वो सबको पता है. आप सब फैंस हो, आपने भी धक्के खाए होंगे. तो it is they're a very important component, and मेरे ख्याल से they need to be treated with greater respect than they have been. I have seen it grow. I've seen the fandom grow to a degree के हमारे फैंडम का थोड़ा नेचर भी थोड़ा चेंज हुआ है. In 2003 वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका, फॉर द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड सीइंग इतने बड़े नंबर में इंडिया से फैंस आए थे. दे वर ऑन ऑल द फ्लाइट्स, वी वर गोइंग फ्रॉम वन वेन्यू टू द अदर. मैं एक चीज आरआर के फैंस को बताऊं कि मैंने एक ही फाइनल कवर किया है, वो 2008 वाला था जब आप जीते थे. मुझे याद है वो फाइनल. मुझे याद है हम 12 बजे रात को खड़े हुए वेटिंग फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कहाँ है शेन वॉर्न आने वाला, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है. in DY Patil Stadium, which was not there was nothing else around DY Patil Stadium at the time. And again, it was full. There were fans there. The IPL has created a larger number, and आप देख रहे हैं कि साल every year that number grows and it changes a little bit. तो इस साल जो ये commentary शुरू किए हैं उन्होंने in some new languages, गुजराती, ओडिया, पंजाबी and भोजपुरी,
you'll just see another explosion in that number of fandom. जब IPL पहले आया था, we couldn't get our heads around it because we were used to covering Bombay Ranji Trophy versus Delhi Ranji Trophy, and Bombay ki Ranji Trophy team is the greatest. But this is a new thing that has come out, and you can't. I mean, whatever I think about it as a purist or test, I can't argue with IPL. It's just it's such, it has changed the economy of cricket. It has changed cricket completely. And that is because of the fans. आर्यन भाई, आपसे सेम क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं। यार इसी से बता सकते हैं, देखो ट्राई तो मैंने की थी पर मेरे एग्जाम आ गए बीच में, तो मैं आईपीएल के लिए आ नहीं पाया। तो इतना इतना क्रेज है। और आई थिंक मैम ने बहुत अच्छा डिफाइन किया, इंडियन क्रिकेट इज बाय द फैंस। जो हम फैंस इतना इम्पोर्टेंट है। एंड इफ यू लुक एट फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इफ ही इज प्लेइंग, इवन व्हेन आई एम प्लेइंग, इफ माय डैड इज देयर, दैट्स सच अ स्ट्रांग सपोर्ट टू मी that he is watching me, and from the corner of my eye, I know there's someone to support his voice from the outside. For the players, it's such a good motivation. It brings that extra 10-20%. If a fast bowler is slightly, I'll give you an example. Mohammad Shami was bowling, and this is the match where Sam Curran took a hat trick. 30 balls, 30 people left the ground. I'm not even joking. 5,000 people left the ground. We've lost the match. But as Rishabh Pant got out, we started getting wickets. The crowd noise went up, and Shami from 120s, 130s, he started going 145. So that is the impact a crowd can make on a player. He's that's the advantage they have, and we love to see them. Yes, and I have this theory. I don't know if it's right or wrong, that our team needs us. When they're down, and I'll give credit to them, man. 10 years we've been waiting for it, but every time we go into an ICC tournament, the hopes are there, and especially this time, इस बार तो घर पे है. So I think let's hope for the best, or whatever team is shaping up, irrespective of the injuries, I am confident will do really well. रोहित भाई, आपसे भी सेम क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मतलब कितने इम्पोर्टेंट है इंडियन फैंस जो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। मुझे लगता है फैंस की कुछ स्टोरीज तो हम लोग ने खुद ही एक्सपीरियंस की है। जब हम लोग डीवाई पाटिल में मैच देखने गए थे, और हम लोग सिर्फ 10 सुपर रॉयल्स थे फ्रंट रो में, और उसके आसपास पूरे मुंबई इंडियंस भरे हुए थे, और उन्होंने हमें भर भर के ट्रोल किया पूरे मैच में। फिर भी हमने मैच का पूरा मजा लिया, और जब 19th ओवर में वो हार गए, तो ये सारे चुपचाप उठ के चले गए। तो वो बड़ा ही अलग तरह का एक्साइटमेंट था एज अ फैन। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो अभी 83 ऑब्वियसली हमने मूवी देखी, हम उस टाइम तो छोटे थे, बट अभी जब देखते हैं ना कि वो फैंस कैसे थे, क्या उनका एनर्जी लेवल्स था, तो वो देख के अभी बहुत अच्छा लगता है। बट आप और सचिन तेंदुलकर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इंडस्ट्री में एंटर किए थे। वो एज 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 अ क्रिकेटर, आप एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो मैम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि वही आपको उस समय लगा था कि वही 16-17 साल का लड़का जिस तरह का ग्रिट, जिस तरह का डिटर्मिनेशन दिखा रहा है फील्ड पे, आगे चल के गोट ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाएगा। मतलब इंडियन फैंस उनके पैर छूने के लिए 10-10, 100-100 किलोमीटर भाग के आते हैं मैम। His success and his rise was like inevitable. It just was. It is, what is crazy is that we expected him to succeed, and he succeeded, and not like he was like this, and he just scaled like that, which is not a common thing. Hota nahi hai. People have ups and downs and whatever, you have it, and thoda unka career take. But from the age of 16, when he got 100, when he was, I think, 1990, when he was about 17 or something, he just become, I think, 17. He said, of course, he's such a Tendulkar, he will get 100. So his success was so, as Bombay cricket people, we felt his success was so inevitable. तो होना ही था, ये Bombay का cricketer है, he's a new version of our game. What, when you look back and you realize, is that it is not a common thing that you are expected to succeed and you succeed. His career has been extraordinary. He's been quite an extraordinary player. हमने अभी भी हमें story हमको सुनने में आती है that we are just zapped by his what he was in as a player. अभी तक जितने मैचेस हुए आईपीएल के, कंपेटिटिवनेस आपको इस लीग की किस तरह की लग रही है इस सीजन? ये लीग है, ये ऑलवेज कंपेटिटिव है, क्योंकि 2 महीने के लिए चलती है, एंड यू हैव, बिकॉज ऑफ होम एंड अवे गेम्स। आई मीन, जब कोविड था तब भी हम लोग मैच देखते थे। इट्स अ वेरी कंपेटिटिव लीग, एंड बाय द वे, आई थिंक एसआरएच अपना दूसरा मैच हारने वाला है आज।
No, actually, it's only 20th over. 115 रन बनाए and Delhi will not want to lose three. राजस्थान के अगेंस्ट है ना आपका मैच कल. हाँ, so Delhi would not want to lose 3 games in a row. They've already lost 2. तो लीग बहुत ही कंपेटिटिव है. इसमें और मुंबई इंडियंस की जो स्टार्ट है वो ऑलवेज मुंबई इंडियंस के हार रहे हैं, तो दे थिंक अच्छा कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे कूद के आ जाएंगे बाद में एट द एंड टू सरप्राइज एवरीबडी. But very happy to see how Punjab Kings have done. And Gujarat Titans are looking tremendous. It's looking like it's not that there's any weak link per se to speak in any team, because they're very well balanced. A lot of them, they've all got all kinds of players. You look at Hyderabad and you think, how have they, how are they doing so poorly in this tournament? How they haven't done well at all. But it's a tremendous league, and it'll be the matches very competitive. We've just begun. So जो हमारा every team tries to win 5 or 6 matches at home. तो वो हो जाए, then you think that you'll get across the line, you get into playoffs and everything. इसमें वो 10 teams है, तो playoffs का भी उनको कुछ complicated होता है end में. Some cross जो भी है था division, whatever, only you guys understand it. I got to look at the chart every time, but very very competitive, great fun. मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपके ओपिनियंस लेना चाहूंगा एल क्लासिको, द रियल एल क्लासिको के बारे में, जो पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाता है. It's difficult. आप कह रहे हो El Clasico, today they're calling it Biryani Derby because Lucknow is playing against Hyderabad. Hyderabad. So everyone is saying it's no, but the Punjab and the Rajasthan rivalry has been very very fierce, and I'm glad that you have called it your El Clasico. आपने नाम ही दे दिया उसको, which is fine, क्योंकि अभी तक किसी ने दिया नहीं है किसी चीज का नाम. Others, Mumbai will say we are El Clasico against Chennai or whatever. They'll do that. I've taken the name, very good. Branding लगा लो, say no other match can be called El Clasico than us. But I really enjoyed the last game because of the fact that you had these younger players coming through. Dhruv Jurel, जिसने किसी का नाम ही नहीं सुना था उसके बारे, and as much as I was happy that Punjab had a good result, what I find interesting about Rajasthan is that they'll always produce these players out of nowhere. They'll produce these great players. They'll try something unusual. थोड़े शायद 1 महीना 6 हफ्ते पहले मैंने जुबिन बरूचा से बात की थी किसी और सिलसिले में, और वो the kind of things that he was talking about and the kind of work that they're doing, so interesting. आज ही कोई बात कर रहा था, उन्होंने कहा that was a classic example of how do you bowl when there is dew. Yeah. What do you do when there is dew? Slow the game down, I mean, outstanding. So Punjab, and you have the other fantastic Australian who came and just nikalo wickets. Yeah. Yeah, so a real fun, because these are not big stars, but they become stars of their own in these kind of contests and in this match. तो आरआरपीबी के इसका मैच है, तो लास्ट ओवर में 4 रन भी डिफेंड हो जाएंगे, है ना, लास्ट बॉल पे विकेट भी गिर जाएगा, है ना, लास्ट बॉल पे छक्का भी लग जाएगा मैच जीतने से पहले. तो मतलब इतनी कंपेटिटिवनेस, पड़ोसी है माना, थोड़ी आनाकानी होती है पड़ोसियों में, और इतनी ज्यादा भी होनी ठीक नहीं है. मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? Quality of players over the years on both sides has been brilliant. And again, I don't want to say the name, but I'm going to say it. Sorry, Punjab fans. From Rahul Tewatia, from Rahul Tewatia to now Sam Curran, the way he, and उसके बैंक अकाउंट में हमने 18 crore एक रीजन से डाले थे, and that was the reason. His recent T20 World Cup, the way he's held his nerve, not easy. You ask even an experienced bowler like Jasprit Bumrah, he'll have the nerves, and for him to do that was exceptional. I think we've been missing out on these close games, especially the away wins in the past few years. We were above on the net run rate on RCB last year, and what we missed was this one game. अब वो लोग कह रहे हैं ओडिन स्मिथ 2 छक्के ना खाता, कौन खाता है 2 छक्के 2 बॉल में 13 रह गए. So I think it's all luck, बहुत underrated factor है. There's still one match to go. I won't boast too much about this one, क्योंकि हमें हमारी हिस्ट्री पता है. हम शुरू अच्छा करके खत्म खराब कर सकते हैं, हम खराब शुरुआत करके खत्म अच्छा कर सकते हैं. तो I am not even going to say anything. Just watch 14 games. Expectation तो है ही नहीं ज्यादा इस बार. आराम से देखेंगे 14 मैच हमारे. शारदा मैम, ध्रुव जुरेल के बारे में बताइए. जैसा आपने अभी पिछले पॉइंट में मेंशन भी किया था कि यंग प्लेयर्स को राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से निकालती आई है, उसी में अब नाम शामिल होने वाला ध्रुव जुरेल का. Very impressed with Dhruv
Jurel, and the fact that they took the decision to send him in completely inexperienced and threw him into the deep end. ये भी एक चीज कहनी चाहिए कि because it's early on in the tournament, so that's a chance you're willing to take. You already won a game, so you've got a little bit, you got some points on the way. You're looking fine. You said, okay, let's take a chance and let's send him out there. And Hetmaya was also there at the time, so it was a great timing to sort of send out this debutant. लेकिन बॉल तो उसी को खेलनी है, हाँ इंटरनेशनल बॉल तो उसी को फेस करना है. So but the way he played with composure and जो होता है वो improvisation, he's trying to play shots around the wicket, lap shot खेल रहा है with complete confidence. So obviously he's been trained well enough to be in the right mind space to be able to come and play at this point. थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा मैम. लास्ट ईयर तो 2022 के सीजन में फाइनल्स तक राजस्थान रॉयल्स की टीम पहुंच गई, बट इस साल पहले 2 मैच देख के आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए इस टीम में, क्या कॉम्बिनेशन के साथ खेला जाना चाहिए? I think at this point, what you have, Rajasthan Royals has, you've got a component of bowlers that I was looking at your spinners and saying, "Bhai, this is the Indian team." Yeah, you've got Kuldeep, you've got Ashwin, and you've got Chahal. You know, so you've got the spin component of the Indian international team that wins you matches, that wins you big games. Plus, you know, you would want that as the season goes on. It's too early actually to say that they're looking good. They're looking very good. The fact that they turned up, that Jurel ki jo performance thi, Shimran Hetmaya also, you'll say, okay, should he bat higher? Wo Butler ki thodi injury hui thi, so everything was up and down. You've seen how Jaiswal has played as well. So it looks that they've got their combination right. They've got their order right. Cheeze hote rahengi that you'll have to change and chop and change in that sense. But it's too early in the season to say this. आर्यन भाई, आपके पास आना चाहूंगा मैं आईपीएल सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन को लेके. आर्यन भाई, थोड़ा सा पीबीकेएस के बारे में बताओ, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस बार पीबीकेएस से? I have never had problems with us having great players. I've always had problems with the team environment. I don't know what's on in the dressing room. I always call it the MICSK model. If you need to build a team culture, it takes time, and you've seen how successful MI and CSK have been because players have been secure. Or Harsha sir always tells us as turbulence teams, and we have been one of those turbulence वाली team की देखा नहीं एक मैच लिया और बाहर बिठा दिया, फेंक दिया, इसको इधर कर दिया, which is never unsettling for players as well, and I don't know what went on. But this time, the way Trevor is speaking in the dressing room and Gabbar is mast mola. Ma'am, I'll come to you again. आप थोड़े ऐसे मोमेंट्स के बारे में बताइए अपनी लाइफ के और अपने करियर के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट भी है एज वेल एज फनी भी है, और जिसके बारे में हमको कहीं और से जानने को नहीं मिलेगा. तो थोड़े इस तरह के मोमेंट्स पे आप थोड़ी लाइट डालिए. अच्छा, I'll tell you one story. So this is 2001 May. Now the 2001 series, we have gone to Chennai for the third test match. Huh? We have lost in Bombay, then Calcutta happened and the world has changed and everything. So I was working with India Today. At that age, you are so, I was literally thinking like a fan. Normally, now I can go to an India match and I can be absolutely calm when a match is happening. I can watch it with full detachment. But at that time, I was like about just turned 30. And you're saying, देखो, आज last day, we have to make the Australians as nervous as possible. You know, we have to make them think that आज बहुत pressure होगा, they will not be able to handle it. So Savita and I are sitting there and it is hot. We are pretending that it is more hot than other. See, बहुत गर्मी है यार, मरने वाले. It doesn't make a difference to anybody. These are professional cricketers. We are fanning ourselves. We are sitting on the ground. At that time, there was not that much security and distance and all that. So we could actually walk down from the press box down onto the ground. But we are saying, nahi, we have to say, they're coming back from training and all that. We are saying, bahut garmi hai, it's very hot. This was our mental disintegration of the Australian team that we were trying to do. It's fine, we won. It was a good day. That was the thing that was there. Then there is another, it's not a funny story, but it's just an unusual story that at one point, a South African journalist told me, he said, we were talking about it, and this was in Cape Town. The World Cup was either beginning 2-3 days before or something. So he told me, he said, Mandela is coming to meet the South African team today. And nobody else knew. He just told me, he said, if you want to go, just go. So I remember going to South Africa. I remember going to the team hotel. And I told my friend, I said, listen, Mandela's coming to the team hotel. I'm going. Would you like to come? So there was not much interest. I don't know why. So I went.
And when you saw him come in, he was very old. He was walking with a he was on a stick, and it's literally like that whole place. It was a lobby में जैसे होता है hotel में. There are people. The moment he walked in, everything stopped. Like everything stopped. He walked slowly into this thing, and he just went out, and he stretched his hand out to another. I said, "Hello, and how are you?" And that girl said, yes, yes, it was there. So I asked, do you know him? He said, no, I don't know him. So he went up and he came back after about half an hour. And Gerald Majola, who was the CEO of South African cricket, he introduced me to Mandela. I said, he's a journalist. So I thought almost fell at his feet. I had no composure. I was just mumbling. I was shaking his hand and mumbling. It was through cricket that I was able to do this, and I was so grateful for that time. So thank you so much, everyone. A big thanks to our viewers जो हर हफ्ते शो के साथ इंटरैक्शन और एंगेजमेंट बनाए रखते हैं. आप लोगों की जो इंटरैक्शन है, एंगेजमेंट है, उसकी वजह से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हर हफ्ते हम कुछ शो में नया करें, कुछ शो में अलग करें और आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आए, कुछ अच्छा लेके आए. तो थैंक यू सो मच. और रिमेंबर, आईपीएल सीजन इज ऑन. तो राजस्थान रॉयल्स को पूरे दिलों जान से सपोर्ट करना है. ऑफ द फील्ड पूरा आपके हाथ में ये डिपार्टमेंट. ऑन द फील्ड तो हमारी टीम हल्ला बोल ही रही है. ऑफ द फील्ड हल्ला आपको बोलना है. कोई भी जगह, कोई भी एरिया, मोहल्ला खाली नहीं रहना चाहिए राजस्थान का. और जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जहां से भी सपोर्ट करते हैं, पूरे दिलो जान से राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करना है. मिलेंगे अपन अगले एपिसोड में अगले हफ्ते. टिल देन, हल्ला बोल.